आई होप ना ये टोपोलॉजी दिख रही होगी आपको, है ना? ठीक है, दिख रही है सभी को, एवरीवन? हाँ हाँ, Yes, sir. टोपोलॉजी दिखती है। ओके, एक मिनट। Okay, so guys, see, basically na in this topology we have a three router, router 1, router 2, router 3. Okay, first of all I just give you the overview of this topology. Fine, so we have a three router, router 1, router 2, router 3. Fine, so these are the PCs connected with router 1, router 2 and router 3. Fine na, clear है ना इतनी बातें? See, here in this area we are using which network? 10th network. Just give me a minute. Okay, so here we are using 10th network, here we are using 20 network, and here we are using 30 network. Clear na? Here between R1 and R2 we are using 40 network, and R2 and R3 we are using 50 network. Clear na everyone? Tell me. अरे बता दो. Yes, yes. Clear 50, na? 40. Yes. Yes, 40, Okay. 50. Now, what is our task? Configure the OSPF on all the router and advertise all the directly connected network into the OSPF. क्लियर ना? पहले मैं पीसी पे चेक कर लेता हूँ आईपी एड्रेस वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं. फाइन. So see, 10.1 is IP address. Subnet mask is this one, and default gateway is guys 10.10. This is the default gateway for these two PC, right ना? इतना तो पता होगा ना? Yes. Yes, yes. Okay. On every PC, I think IP address is configured. Yes, 20.1 default gateway is there. On R5, 30 is there and 30.10 is there. No problem. Fine. Now come on this router. What is happening, guys? उसमें सबनेट मास्क क्लास ए का ही रखा हुआ है सर। हाँ, क्लास ए का ही रखा हुआ है. So IP interface brief. 10.10 is configured there on 0/0 and 40.1 is configured on gig 0/1. Right now? After that, we configured one loopback 1.1.1.1. Fine. Now, Yes, show yes. IP protocol. Yes, there is no protocol configured here. I just configured the IP address here. Right now, everyone. Yes, yes. Now on R2, I check the. See, 20.10 is configured. This one, and loopback 2.2.2. is configured. Clear ना everyone? इतना तो clear है ना? सारे पे IP address यानी configured है. Yes, Clear ना? yes, yes. 20, 40, 50. Now what I am doing, I am configuring the OSPF on R1. What is the command? Router OSPF, for example, 100 we are using. Clear ना? अरे बता दो. Yes. Yes. Router OSPF 100. After that, we need to configure the network command. Right. So on R1, how many network I configured, guys? Total 3 network. 10 network. Is 10th, second one is 40, and third one is 1.1.1.1. Right? अरे बता दो. Loop back. Yes, For loop back. example, network, what is the wildcard mask? 0.0.0.0, right? 2. And we need to configure in area number 0. Area 0, Fine. area 0. After that, again, network, 10th network, 10.0.0.0. What is the wildcard mask? 0.255.255.255. After that, area is 0. Again, 40 network.
Wildcard mask 255.0.0.0 and area is guys 0. सर ये गलत हुआ ना? Oh yeah. 40.0.0.0.0 0.255.255.255, right? Area is 0. Clear na? Now check so IP protocol. So if I am writing so IP protocol, see OSPF 100 is configured here, right? Router ID is by default 1.1.1.1 because router router will check the loopback address, right? Only one loopback is there. That's the reason router ID is 1.1.1.1. Fine. Routing for network. It means this router number 1 will perform the OSPF routing for 1 network, 10th network and 40 network. Clear na everyone? Yes. Now, by default, AD value is 110. We already know OSPF AD value. Clear? Bata do, clear hai na? Okay. Now, come on R2. Router OSPF we are configuring 200. I told you ना कि this is the process ID and this is locally significant. तो ये जरूरी नहीं है कि जो आप R1 पे मैच कर रहे हो वो सेम मैच यहाँ भी करोगे. EIGRP में जरूरी था, राइट ना? ओके. अरे बता दो. Router OSPF 200. After that we need to advertise the network. So first of all I am advertising 2.2.2.2 0.0.0.0 and area will be guys 0. After that 40 and wildcard mask 0.255. area will be 0. After 40 there is a 50 na. There is 50 also, yes. 0.255 area. Then area will be 0. After that 20. Yes, 20. Okay, I configured everything here. Now check so IP protocol. Yes, OSPF 200 is there. Router ID is 2.2.2.2 and these are the advertised network which I advertise in the OSPF. Yes. Clear na? It means now I configured the OSPF on R1 as well as I configured the OSPF on R2. It means now R1 and R2 will become the neighbor. Tell me yes or no. Yes. Yes. How can you check? So IP OSPF neighbor. OSPF neighbor. With R1. Neighbor ban gaya na? Tell me yes. Priority is by default 1. I told you in case of OSPF by default priority will be 1. And what is the state? State is full state. Full state. Full state. And what is the in yesterday class I told you for every segment there will be a one DR and BDR election. आपको बताया था ना एक DR और BDR की election होगी. So between R1 and R2, who will become the DR and who will become the BDR? बताओ. First of all, router will check the priority by default. Priority will be 1. Yes. So it will type. After that, router will check the router ID. R1 router ID is 1.1.1.1 and R2 router ID is बताओ क्या है 2.2.2.2. So who will become the DR? बताओ ये इससे less router ID will be. अरे नहीं highest router ID will become the DR. Highest router ID will become the yes highest 2.0. तो 2 को क्या बननी चाहिए थी DR ना DR. So IP OSPF neighbor. Who is the DR? 2.2.2.2.2 is full and DR. इसका मतलब 2.2.2 क्या है DR है और 1.1.1 क्या है आपका BDR है. Okay. Understand ना everyone? Yes. And this is the dead time. ये तो dead time है ना. ये 40 सेकंड का होता है dead time. पता होगा ना. Yes. Clear? And this is the address. Now come on R3.
router OSPF 300 network. First of all, we need to advertise 3.3.3.3. Fine. 0.0.0.0. Area will be 0. After that, network 50. Then 0.255.255.255. After that, area will be 0. After that, which network? 30. 30.0.0.0.255.255. Area is 0. Area will be 0. Anything else? No, Loading, na? full loading. Only Yes. 50, 30. So IP protocol. See, one so IP protocol, 2, 3 3. network I advertise, 50 network I advertise, and Yes. 30 network Yes. I advertise. Right na? Advertise. Clear na? Okay. Router ID is the Information highest source. loopback address, that is 3.3.3.3. No problem. Yes. Yes. Clear na? Okay. So I hope you guys understand till now ki what I did. I just configure the OSPF here. Fine. Now, task number 2, elaborate the concept of router ID and how to change it. I think in yesterday class I told you about the router ID. If you guys remember, मैंने कल बताया था राउटर आईडी के बारे में. ठीक है, मैंने कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट नोट डाउन किया है राउटर आईडी के बारे में, तो प्लीज आप लोग क्या करोगे, इसे रीड कर लेना. ठीक है एवरीवन. Yes. ओके. राउटर आईडी क्या होती है? व्हाट इज राउटर आईडी? आई टोल्ड यू राउटर आईडी इज द यूनिक आइडेंटिफायर. Unique identifier. I told you, na, this is the unique Unique identifier. identifier. It Yes. is used to identify the router within the OSPF. It means in the OSPF, how you identify the router? By the help of router ID. Right? What is the selection criteria? By default, OSPF select the highest IP Highest address type. of the Yes. router's loopback interface as the router ID. Right ना? जो loopback आपने create कर रखा है उस पे जो highest loopback address होगी, that will be the router ID. Fine. But if no loopback is configured there, then highest IP address will become the router ID. Fine. Router ID. Clear Yes. ना? Yes. Otherwise Yes. आप इसे manually भी configure कर सकते कर हो. सकते हैं. Importance. Router ID plays a crucial role in the OSPF operation. It is uniquely identify each router within the OSPF domain. I already told you. It is used in the OSPF packet header and LSA. I told you in case of OSPF, generally we are using LSA. LSA, what is LSA? This is the database. This in Link case state of algorithm. OSPF, database is known as LSA. कुछ LSA कुछ नहीं है. LSA का मतलब होता है database. क्लियर ना? Okay. OSPF के केस में जो डेटाबेस होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? LSA के नाम से जानते हैं. LSA. क्लियर ना? So Yes. basically every LSA in the case of OSPF is represented by router ID. सारा डेटाबेस किससे रिप्रेजेंट होता है? राउटर आईडी. Router ID. Router ID दिखाएगा मतलब. Fine. OSPF router ID should remain stable to maintain consistency within the OSPF network. I already told you in yesterday class. Changing the router ID can disrupt OSPF neighbor adjacency and cause unnecessary OSPF. Yes. So if you are changing the router ID, what will happen? Again, neighborship will form. सारी चीजें फिर से होगी. ठीक है, तो ये चीजें बहुत संभाल के किया जाती है रियल नेटवर्क में. Now, to manually set the router ID, what is the command, guys? First of all, you need to go router OSPF. For example, I just show you na here. For example, what is the router ID of R1 here? So 1.1.1. IP protocol. Router ID is 1.1.1.1. 1.1.1. Fine. For example, I want to change the router ID 4. 50.50. Okay. Any router ID. How can you check? Router OSPF 100. Fine. After that, what you need to write? बताओ क्या लिखोगे? Router ID. Just command router ID. And here I am writing, let's suppose 10.10.10.10. 10.10.10.10. So after this, I am getting one message. What is the name of that message? Reload or use the clear IP OSPF process command. Then after it will implement. ये बोल रहा है कि आप ये वाला कमांड रन करो तभी ना ये क्या होगी? इम्प्लीमेंट होगी. यानी आप ये बोल रहे हैं कि OSPF प्रोसेस को फिर से एक बार क्लियर करो. क्लियर ना एवरीवन? OSPF प्रोसेस. क्लियर. और आईपी और रीलोड भी कर सकते हैं, ऐसा बोला है. हाँ, रिलोड भी कर सकते हो. क्लियर आईपी OSPF
प्रोसेस जनरली हम ये करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि इन रीलोड जनरली यू गाइस विल टेक द टाइम, राइट। मैंने ये कर दिया तो आईपी प्रोटोकॉल, तो इफ आई एम चेकिंग द प्रोटोकॉल नाउ व्हाट इज द राउटर आईडी 10.10.10.10. I hope you guys understand till now, Okay. right? Manually. We have configured it manually. Manually, yes. Clear na? Okay. How can you verify? So IP OSPF command. Yes, you can write so IP OSPF command also. So IP OSPF. So if you write the so IP OSPF command, what is the router ID? 10.10.10.10. Clear na everyone? अरे बता Yes. दो, clear Yes. ना? Okay. Now elaborate the neighborship criteria in the OSPF. Guys, tell me one thing. Right now, R1 and R2 both are neighbor. Yes or no? Yes. Yes, na. Hmm. So IP OSPF neighbor. Who is the neighbor? 20 Neighbor. Oh. 2.2.2.2 is the neighbor. There is a no Router ID problem. will be shown. Yes, it means on R1 I am writing so IP OSPF neighbor command. Then I am getting 2.2.2 is the neighbor of R1. Right? Okay. Yeah. Now, in yesterday class, I told you there are some neighborship parameter in case of OSPF. If you guys remember, right? I told you about the OSPF parameter. See na? Area ID. If you guys remember, area should be same. मैंने कल ही बताया था कि जब आपका नेबरशिप तभी बनेगा जब एरिया आईडी क्या होनी चाहिए, सेम होनी Area चाहिए। should be same. Yes. दूसरा मैंने Zero. क्या बताया था, हेलो टाइमर एंड होल टाइमर शुड बी सेम, राइट। थर्ड बताया Yes. था राउटर आईडी शुड बी सेम, राइट। और चौथा बताया था सबनेट Time should be मास्क शुड बी matched. सेम, राइट। Yes. And time should be matched. Time be यस, matched. टाइम शुड बी मैच, राउटर आईडी शुड बी यूनिक, राउटर आईडी शुड बी यूनिक, नॉट Unique. सेम, इट शुड बी यूनिक, राइट Unique. ना। तो ये दीज आर दी पैरामीटर फॉर द ओएसपीएफ नेबरशिप। अरे क्लियर है ना एवरीवन, टेल मी। Yes. Yes. For example, on R1, if I am checking, so IP protocol, so IP protocol. So Protocol. it means all the network is advertised in which area? Area Area number 0. 0. Area 0. Yes. Let's suppose on router number 1, what I will, sorry, router number 2, what I will do, I will configure area 1. मैं यहाँ पे ना कोई दूसरा एरिया कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो if I configure area 1, then R1 and R2 will become neighbor or not? Yes, definitely not. Definitely not. समझ में Yes. आया? Because of yes. Because of area Because of parameter area is will not different. match. अगर आप ये Okay. देखोगे तो Area will एरिया पैरामीटर मैच नहीं not करेगी, match. इसलिए। Yes. Yes. क्लियर ना? होस्ट नेम R2. R2. For example, what I am doing, for example, router OSPF, I think 200 we are running here, right now? Yes. Yes. I am just, what I am doing, yes, router Area. OSPF 200. I already run here We need network to command. change. No network. I already advertised 40 network here, na? Yes. No 40 network dot 0 area. dot 0 dot 0 and wildcard mask is 255 dot 255 dot 255 and area is Area. 0, right now I am removing this Area command. 0. अरे एरिया 0 मैंने पहले Okay. चला No रखा था ना, मैंने network. जस्ट रिमूव किया है, फाइन। एंड Okay. नाउ Okay. व्हाट आई एम डूइंग Okay. here, I am Network. just removing the no keyword here, and now I am writing here instead of Area area 1. 0 I am writing area 1 here, फाइन। मैंने एरिया 1 कॉन्फ़िगर कर दिया। डू सो आईपी प्रोटोकॉल, चेक करो आप, व्हाट इज 40 नेटवर्क इज अ पार्ट ऑफ नाउ एरिया नंबर 1। Area 1. Yes. नाउ चेक दी नेबरशिप बिटवीन R1 एंड R2। R1 R2 के बीच में नेबरशिप चेक करो। सो आईपी OSPF neighbor, is there any neighborship? So IP OSPF neighbor. No neighborship found here. Why? Because on R1 you are running area number 0 and on R2 you configure 40 network in area number 1. Yes. Fine. It means area ID is different between R1 and R2. That's the reason there is a no neighborship. I hope you guys understand it. Clear? This is the first Yes. neighborship criteria. अरे clear है ना इतनी बातें? Yes, sir. Can we show this command on R2 also? R2 also, yes. So Yes. Yes. IP
OSPF नेबर। सी किसके साथ नेबरशिप दिख रही है? 3 के साथ दिख रही है, 2 ओनली के साथ, 3 के साथ है, 1 के 1 साथ के दिख साथ रही है नहीं। क्या? इसके साथ तो नेबरशिप है ही, इसके साथ दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। सी ना, यस you are getting the message. सर। Mismatch area ID. Mismatch. सर हाउ इट mismatch area ID, how it's showing 3.3.3 How it is R2 showing R2 3.3.3.3. See, R2 is basically the ना, I just mismatch the router ID between R1 and R2. मैंने R1 R2 के बीच में एरिया आईडी मिसमैच किया है। फाइन। अरे मैंने क्या किया नहीं समझ में आया? मैंने क्या किया कि जब मैं राउटर OSPF 200 के अंदर 40 नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा था, जो कि R1 से कनेक्टेड है, तो 40 नेटवर्क को मैंने क्या किया, एरिया नंबर 1 का पार्ट बना दिया। फाइन। सो R1 इज सेंडिंग द हेलो पैकेट। इन दिस हेलो पैकेट, व्हाट इज द एरिया आईडी? 0। एंड R2 इज सेंडिंग द हेलो पैकेट, एंड व्हाट area इज द ID is एरिया आईडी? 1 1। 1 एरिया आईडी मिसमैच हो गए, yes नेबरशिप डाउन हो गई। in R3 area ID is 0। एरिया आईडी 0। बेसिकली एरिया आईडी मैंने किसका चेंज किया? इंटरफेस का चेंज होता है हमेशा। yes okay वेन okay एवर यू आर राइटिंग द नेटवर्क कमांड, आप जब भी नेटवर्क कमांड लिखते हो, फॉर एवरी नेटवर्क यू गाइस आर मेंशनिंग द एरिया आईडी। टेल मी यस और नो। yes तो दैट द रीजन फॉर 40 नेटवर्क आई चेंज ना। मैंने 40 yes नेटवर्क के लिए चेंज कर दिया, बट 50 चेंज कर नेटवर्क के दिया, लिए तो मैंने चेंज ही नहीं किया था। तो दैट चेंज द नहीं रीजन किया। देयर इज स्टिल नेबरशिप। समझ में आया? Okay क्लियर it है? means there is neighborship in between that network। यस, दैट नेबरशिप बिटवीन नॉट राउटर। अब राउटर से मत समझ लेना कि राउटर राउटर होता है, नहीं, okay बिटवीन द नेटवर्क होती neighborship है। is between बिकॉज network। हेयर इफ Okay यू आर यूजिंग द 3 राउटर, इट मींस देयर आर 1 एंड 2, दीज आर द 2 डिफरेंट मल्टी एक्सेस सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो नेबरशिप एक yes इस सेगमेंट में ही बनेगी और इस इस segment सेगमेंट में में ही बनेगी। yes क्लियर है ना एवरीवन? yes clear। ओके, नाउ ऑन R2 आई एम रिमूविंग दिस वन। ना आप लोग देख रहा होगा ना, रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट मिसमैच एरिया आईडी फ्रॉम yes बैकबोन एरिया। राइट, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है ना? yes मैसेज मिल रही है मुझे। ऑन R2 राउटर OSPF 200, आई थिंक वी रन विच कमांड, सॉरी, एरिया area 1। 1 अब मैं इसे एरिया 0 कर दूं। yes so in this condition we have to put that तो command तो आईपी no प्रोटोकॉल, एक मिनट, आप देखो, आई थिंक नाउ एवरी नेटवर्k इज अ पार्ट ऑफ एरिया नंबर 0। राइट yes। नाउ डू, इस समय एरिया 1 को डिलीट करने का जरूरत नहीं होता क्या, जैसे नो वाला जो कमांड चलाते हैं अपन, मैंने, नो नेटवर्क। नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो हट जाती है ऑटोमेटिक। डू सो आईपी OSPF नेबर। नाउ सी, क्या दिख रहा है आपको? 10.10.10 के साथ भी बना लिया ना, क्योंकि मैंने R1 के ऊपर आउटर आईडी क्या बनाया था? 10.10.10.10। 10 yes क्लियर ना एवरीवन? क्लियर है yes इतनी बातें? तो दिस इज द फर्स्ट नेबरशिप पैरामीटर, एरिया आईडी। क्लियर है ना एवरीवन? yes नाउ सेकेंड इज गाइस hello timer and hold timer. Generally we are not doing this one, but I will show you कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। इसे आप थोड़ा याद रखने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑन R1, मैं R1 पे हूं और गिग 0/1 है। व्हाट इज द इंटरफेस? गिग 0/1। 0/1 राइट, yes इंटरफेस गिग 0/1। ऑन गिग 0/1 आई एम चेंजिंग दी व्हाट, हेलो टाइमर और होल्ड टाइमर। ठीक है, आईपी OSPF हेलो इंटरवल। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द हेलो हेलो टाइम? 10 सेकेंड, hello राइट ना? अरे बाय 10 डिफॉल्ट कितना 10 सेकेंड yes होता है ना? आई 10 एम सेकंड चेंजिंग है। इट 5। 5, EIGRP में 5 सेकंड होता है। मैंने इसका चेंज कर दिया 5। क्लियर नाउ? तो आईपी OSPF नेबर 2.2.2 के साथ नेबरशिप दिख रही है अभी भी? अरे यस बताओ, दिखा रही दिख है। रही है? यस 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 वेट करो, कितना देर? 40 सेकंड का होता है ना डेड टाइम? हम्म अरे होल्ड टाइम 40 सेकंड का होता है ना? ओके यस, वेट करो। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, गया। गया?
I Yes, hope yes, you yes. understand. Second one is guys hello OSP. time और hold time. Clear है इतनी अच्छा. बातें? बता Yes, दो. yes, yes, sir. इंटरफेस गिग 0/1 है ना आई थिंक. इस पे चेंज Yes, किया था. 0 by 1. मैंने क्या चेंज किया था? 0 by 1 पे किया था. ये मैंने कर देता हूँ नो. Right. अभी आ जाएगी अपनी बाय डिफॉल्ट. OSP. ठीक है ना. अ- तो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस गिग 0/1. 0/1 Hello timer 10. आ गई ना हेलो टाइम 10. Yes. अगर आप 8 उस time टाइम चेक 40. करते तो कितनी कितनी मिलती है आपको? उस टाइम जब चेक करते तो यहाँ 5 मिलती. 5. क्लियर है? Okay, yes, yes. ओके. एरिया आईडी हेलो आईडी राउटर आईडी. फॉर 8. एग्जांपल ऑन R1 व्हाट इज द राउटर आईडी? R1 के ऊपर Router राउटर I आईडी कितना है? 1 10 dot डॉट 1 10 dot डॉट 10 10 डॉट dot 10 है. 10 dot 10 dot. Yes, yes. ओके. राउटर ओएसपीएफ 200 राउटर आईडी 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10. आई एम कॉन्फ़िगरिंग द सेम राउटर आईडी. क्या बोल रहा है? फिर से आप वही कमांड यूज करो. क्लियर आईपी Clear IP OSPF process. OSPF process. Yes. Now OSPF is loading. So IP OSPF neighbor. So IP OSPF neighbor. Hmm. अभी भी नेबर है ना? बताओ. Yes, अभी भी है 10 का. कितना देर वेट करना पड़ेगा? 40 अरे seconds. यार ये कहाँ चले गई? एक्स स्टार फिर से चले गई इसमें. R2 में है अभी. कम देखते ऑन हैं. R1 पे चेक कर लो एक बार. तो IP OSPF. OSPF interface. What is the router ID? 10.10.10.10. 10.10.10. तो IP OSPF neighbor 40.2. 10.10.10.10 on R1. 10.10.10.10. यस. इस पैकेट ट्रेसर में आपको दिख रही है कि नेबरशिप अभी भी बनी हुई है. राइट. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा. राउटर आईडी शुड बी यूनिक. याद Okay, रखना. yes, yes, yes. ठीक है. पैकेट ट्रेसर पता नहीं पगला गया है. ठीक है. बट राउटर आईडी शुड बी गाइस यूनिक. Unique, unique. क्लियर Router है ID ना should इतनी be बातें? unique. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ. राउटर OSPF 200 राउटर आईडी. मैं इसको कर दूं 2.2.2.2. फाइन. मैं क्या कर दूं 2.2.2.2 क्लियर IP OSPF प्रोसेस. यस. मैंने इसे कर दिया 2.2.2.2. ओके. सो IP प्रोटोकॉल. व्हाट इज द राउटर आईडी गाइस? अरे बताओ 2.2.2 हो गई ना राउटर आईडी. Yes. नाउ कम ऑन R1. ऑन R1 व्हाट इज द राउटर आईडी? तो 10. IP There is no 10. So I think प्रोटोकॉल स्टिल 10 dot 10.10.10.10. 10 dot फाइन. राउटर OSPF router ID I am telling same. Do clear IP OSPF process. Yes. So IP protocol. What is the router ID? 2.2.2.2. 2.2.2.2. Yes, same So router IP ID. OSPF neighbor still is there. देख In लेते this हैं. condition, नहीं लेगा ही नहीं. दिस इज द बग इन द पैकेट ट्रेसर. ओके. okay. राउटर आईडी मैं फिर से वापस कर रहा हूँ क्या? 1. 1.1.1.1. Clear IP OSPF process.
Clear ना? इतनी बातें clear है ना everyone? Yes, Okay. yes. Last one is guys subnet mask. Subnet mask you can change. For example, on R1, I think we configured Network interface gig 0 by 0 1. by 1. For example, I am writing here no IP address. It means now IP address is removed. Okay. I am writing IP address 40.0.0.1, IP address 255.255.255. let's suppose /26. मैं ये डाल रहा हूँ, ठीक है? क्लियर ना? अरे टेल मी Yes, on it means we 0 are by 1 giving there is a subnet particular mask IP address. /26, fine, and here is /8, है ना? Yes. Now check the so IP OSPF neighbor, no neighborship. No neighborship. Yes, because of Okay, IP because of address. the yes, because of the subnet mask. Clear Subnet na? mask. Yes. In R2 there is a wildcard mask. In R1 there is subnet mask. On interface तो सबनेट मास्क ना हमेशा. Yes, yes. ओ आईपी एड्रेस क्या था 40.1 40.0.0.1 1. 55.0.0.0 and no shutdown command. तो आईपी ओएसपीएफ नेबर. अब आ गई नेबर सिर्फ. क्लियर है? Yes, RP. Now elaborate OSPF table. In yesterday class I told you कि OSPF generally maintain 3 type of table: routing table, neighbor table and database table. Tell me yes or no? Yes, yes. Na? So if I am on R1, I am checking so IP root. So this is the routing table. This is the routing table of R1. अरे clear है ना? Yes. This is the routing table of R1. So it means, see na, in case of routing table, in this routing table, you are able to see all the network information. Even 3.3.3 भी आपको दिख रही होगी यहाँ पे. Yes, yes. Clear? है. Even 10, you 8, guys will 20, see 50 30, network 50. also. 50 Everything is there. also. Okay. Right? O means what? Routing. Because 30 O means network, OSPF. R1 knows 30 network because of the OSPF. OSPF, yes. Right na? Because of the OSPF. Clear na? This is the local routing table of R1. ये क्या है? Local routing table. How can you check OSPF routing table? So IP root OSPF. This is the command to check the OSPF routing table. इसके अंदर सिर्फ आपको OSPF के कंटेंट दिखेंगे. Clear ना? And this is the local routing table. Local routing table में directly connected वाले भी दिखेंगे. Clear? Understand? Okay. This is the OSPF routing table. अरे clear है? Now, see na, two network. Yes, yes. What Sir. is the AD value 110 and what is the cost value 2? What is the cost value 2? So see na, from here to here, what is the cost? कौन बताएगा? 2. Two na? Will be 2. 2. Yes. Yes. Cost will be 2 na? 2. Yes or no? Yes. Yes. Cost will be 2. Yes. So if you check na from here to here, first is 1 cost, and for loop back I told you na cost 1. So total cost will be 2. 2. Fine. For 3 Yes. network, from if I check from here to 3 network, what will be the cost? 1, 2, and this one 3. Understand na? Yes. Are you tell Yes, me? yes. Clear na? Yes. So that's the reason here if I am checking for 3 network, what is the cost? 3. Cost will be 3. Right now? Yes. Okay. So basically this is the routing table. O means OSPF. Clear na? Yes. Okay. Now neighbor table. What is the command? So IP OSPF neighbor. This is the command for neighborship. Who is the neighbor of R1 now? 2.2.2.2 is the neighbor of R1. Yes. Clear na? Yes. And by default priority will be 1. And what is the state?
full state. Full अरे बताया state. था ना Yes. कल full Yes. state. Yes. Yes, sir. Yes. And what is DR? Because 2.2.2 is the DR na. DR. अरे Yes, it is the DR. between R1 and R2 there will be one DR and BDR. Fine. Yes. Yes. The highest router ID will become the DR. So R2 is highest router ID. It means this Yes. is DR and this is the lowest BDR. router ID. It means you can say second highest router ID. So that's the reason this is known BDR. BDR. Fine. Similarly here between R2 and R3 this will become the DR. अरे यही तो होगा DR. Yes. अरे clear ना? And on for this segment this will become the BDR. Clear na? Okay. Now, what is Yes, sir. database? Yes. What is database? I told you na कि basically OSPF store all the data or all the information in which table? Database table. So IP OSPF database. This is the command to check the database table. So IP OSPF database. Fine. If you guys remember in yesterday class, I told you something about the LSS. मैंने LSS के बारे में कुछ बताया था कि LSA कुछ नहीं होती है. OSPF के अंदर जो डेटाबेस होती है वो LSA के फॉर्म में होती है या फिर सीधी सी बात कर लो LSA बोलते हैं उसे. क्लियर ना इतनी बातें? Yes, अरे sir. बताओ. Now see when I write this command, so IP OSPF database, I am getting what? OSPF router ID that is 1.1.1.1. It means I am running this command on which router? मैंने कौन से router पे रन किया है? R1 पे. And what is the router ID of R1? 1.1.1.1. 1.1. I told you कि in case of OSPF, actual database is represented by router ID. डेटाबेस को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? राउटर आईडी से. दैट द रीजन दिस इज राउटर आईडी. ऑन R1 यू आर रनिंग विच प्रोसेस आईडी? 100. क्या रन कर रहे हो? 100 रन कर रहे हो. क्लियर ना एवरीवन? टेल मी. Yes. Yes. नाउ सी in database, first database is guys router link state and that is called LSA1. इसे क्या बोलते हो आप? LSA1 बोलते हो. क्लियर है? याद रहेगी इतनी बातें? Yes, एक बार sir, देख yes. लो फिर से, पूरा रीड करो एक बार. So IPOSP database. Yes, sir. Okay, so basically na I will explain you later as well. See, basically please remember this one, router link state. This is called LSA1. OSPF के केस में ना मल्टीपल LSAs होते हैं. क्लियर ना? LSA1, LSA2, LSA3, LSA4, LSA5 ऐसे ऐसे ना मल्टीपल कंटेंट होते हैं. Area 0 will be LSA1. नहीं 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 नहीं, एरिया को भूल जाओ. एरिया इज डिफरेंट थिंग. एरिया 0 मीन्स आप R1 पे एरिया 0 चला रहे हो. दैट द रीजन यू आर एबल टू सी हियर एरिया नंबर 0. फाइन. बेसिकली ना हर LSAs में हर LS जैसे ये ना LSA1 है, ठीक है ना? अब एरिया 0 इसलिए है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये जो LSA1 दिख रहा है ना, ये LSA1 एरिया 0 का पार्ट है. अगर यहाँ एरिया नहीं लिखा हुआ होगा देन यू गाइस विल फेस द प्रॉब्लम. सी कर क्या प्रॉब्लम क्या होगी मैं दिखाता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको. ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. दिस इज ना हेयर आई कॉन्फ़िगर्ड एरिया नंबर 0, ठीक है? एंड हेयर आई कॉन्फ़िगर्ड एरिया नंबर 1. फाइन. So if there are two different area, it means this router is known as the ABR router. Tell me yes or no. कल ही बताया था. Yes. So if I write the same command, so IP OSPF database on this router, how you guys will identify कि this LSA1 is from area 0 या फिर area 1 का कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कर ही नहीं पाओगे. तो दैट्स द रीजन देयर इज अ पॉइंट. LSA जब आपको LSS दिख रहा है ना, राउटर LSA, उसके बगल में एरिया 0 लिखा हुआ है कि आप आइडेंटिफाई कर लो इस चीजों को. क्लियर है? अरे बता दो. क्लियर है? Yes. ओके. So basically this is known as guys LSA1. This is the LSA1 and for which area? Area number 0. Clear? Net link LSA. ये कौन सा LSA है? Please remember this is known as
नेटवर्क लिंक स्टेट दैट इज नोन एज LSA 2 बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? LSA 2। टू। अरे क्लियर है ना, क्या बोलते हैं? LSA 2 बोलते हैं। ओके ओके ओके। मिस राउटर आईडी को LSA 1 बोलेंगे और यस, नेटवर्क राउटर वाले लिंक पार्ट को स्टेट इज नोन एज LSA 1 और नेट लिंक स्टेट इज नोन एज नेटवर्क। LSA नंबर 2। क्लियर ना? यस फाइन। ओके। व्हाट इज द ADB राउटर? एडीवी राउटर मीन्स ना एडवर्टाइज राउटर, कि मतलब इस वाले एरिया को एडवर्टाइज कौन कर रहा है। तो प्लीज अच्छा, रिमेंबर which वन router is थिंग। advertising this thing? सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि फॉर LSA 1 मीन्स व्हाट? LSA 1 का क्या मतलब है? LSA 1 मीन्स Router एवरी ID राउटर हैव इट्स ओन डेटाबेस। हर राउटर के पास अपना एक खुद का डेटाबेस होता है। database. टेल मी यस और नो। Uh, यस। yes yes फॉर एग्जांपल ऑन R1 व्हाट यू आर रनिंग, आप क्या क्या रन कर रहे हो मुझे बताओगे? क्या क्या रन कर रहे, क्या रखे हो? R1 पे आपने R1 में एक तो R राउटर आईडी router के लिए ID। आपने 10.10.10 कॉन्फ़िगर कर रखा है। यस यस। उसके बाद आपने 1 का नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर कर वन रखा भी है कर रखा है हाँ। है ना? उसके बाद हाँ। R1 ऑलरेडी नोज अबाउट द इट्स नेबर दैट इज 2.2.2.2 है नेबर ना? नेबर राउटिंग। R1 के यस। पास 3 की नेटवर्क भी पहुंच नेबर गई ड्यू राउटिंग टू आईडी। OSPF की वजह से। सो इट मींस ऑन ड्यू टू हाँ। राउटर 1 के पास ये इसके खुद का डेटाबेस है। फाइन। सो व्हाट यू कैन से यस। द लोकल डेटाबेस और यू कैन से द ऐसा डेटाबेस जो राउटर के पास खुद का होता है, दैट डेटाबेस इज नोन एज LSA नंबर 1। क्या बोलोगे उसे आप? LSA नंबर जैसे नंबर 1। 1 जैसे नंबर 1। क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़े। यस यस। एंड दैट इज कॉल्ड LSA नंबर 2। दैट क्या फर्स्ट। है? वी विल डिस्कस इट लेटर। क्लियर ना? यस यस। Okay, so basically guys, this is uh, OSPF table. How many table in OSPF? There are 3 types of table: routing table, neighborship table and database table. क्लियर है इतनी बातें? यस अरे बता दो, क्लियर है? यस। यस। Now if this is clear, I will. Okay, I hope this is visible to all of you, right? ये विजिबल है? यस Okay, see, यस। for example, on R1 I configured OSPF. Fine. On every router I configured OSPF. Clear? Any doubt? No doubt. अब यस यस। IP एड्रेस आई कॉन्फ़िगर्ड लाइक दिस, जैसे कि कॉन्फ़िगर्ड आपको दिख रहा है इस पे। ठीक है। ऑन यस। R1 लूप बैक इज 1.1.1, इसके ऊपर 5 डॉट, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, नो प्रॉब्लम। ओके। क्लियर ना एवरीवन? यस अंडरस्टैंड ना? यस यस। Okay. Now, just tell me one thing. Let's suppose if I configure the OSPF here, so first of all, there will be election of DR and BDR. यहाँ DR और BDR का इलेक्शन होगा, yes or no? यस यस। So for your information, I just tell you one more thing. DR और BDR election will happen on a single multi-access segment. मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक नेटवर्क में एक ही होता है। क्लियर है ना? एक नेटवर्क में एक ही जैसे होता है, R1 एक था, डीआर रहेगा एक R1 बीडीआर 2 रहेगा। और R3, यहाँ पे कितने नेटवर्क कॉन्फ़िगर होंगे आपके, या फिर कितने मल्टी एक्सेस सेगमेंट बनेंगे? एक और दो। एक दो हाँ। So between R1 and R2 there will be a DR BDR election, and between R2 and R3 there will be a DR and BDR election. यस क्लियर यस ना? तो यस सिमिलरली यस। यहाँ क्या होगी? यहाँ तो आप सिंगल नेटवर्क ही यूज कर रहे हो ना, 12 12 सारे पे 12, क्योंकि बीच में स्विच स्विच है, ठीक है राइट? हाँ। So here in this topology there will be a one DR and one BDR. Tell me yes or no? यस Yes. Now, who will become the DR? First of all, router will check the priority. बताओ। हाँ। अरे यस। इलेक्शन क्या है डीआर का? फर्स्ट ऑफ ऑल router will राउटर विल check the चेक दी priority प्रायोरिटी, election।
then priority is by While default 1. election. by default priority क्या दिखेगी 1. अरे बता दो, by default priority will be Yes, 1. on It means on router priority, 1, yes, on default all priority will routers. be So that's 1. the reason priority will tie. Second will be highest router ID will become the DR. बताओ, highest router ID will become the Highest DR. router So ID see, 5.5.5.5, DR. Okay. this is the highest 5 router 5 ID. will be So it means DR. this router will Yes, become it the will be DR. DR. And DR. what will be the BDR? Second highest router ID will become the BDR. It means this will become the BDR. Clear na everyone? Tell me. अरे बताओ. Okay. And other router Okay. ID? Other, And what other about other router router ID. IDs? All the other router, 321. all the other router, all the, just a minute. What I am telling, all the other router except DR and BDR is known as DR other router. मतलब DR और BDR को छोड़ के बाकी जितने भी राउटर होते हैं ना, उसे हम कहते हैं DR other router. क्लियर? अरे बता Yeah, दो. other router. Okay. ठीक है. Yeah. नाउ सी, मैं कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप पढ़ लेना इसे. In a multi-access network such as Ethernet, OSPF router must establish adjacency with all the other router on the network. However, this can lead the unnecessary overhead. अब समझो इस लाइन का क्या मतलब है, बोलना चाह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ना, इफ वी हैव टोपोलॉजी लाइक दिस, मैं सेम टोपोलॉजी की बात कर रहा हूँ. R1 स्विच, R2, R3, R4, R5. क्लियर ना? अगर इस टाइप की टोपोलॉजी है, let's suppose you configure the OSPF on all the router. It means all the router form a neighborship. Yes or no? Yes. 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 For example, आप suppose कर लो this is my DR router. Fine. Suppose कर लो कि ये मेरा क्या है, DR router Okay. है. DR router. So what will happen? For example, R5. R5, what R5 will do? R5 will form a adjacency with R1. R1 के साथ भी अपना adjacency form करेगा, because R5 इसका neighbor तो बनेगा ना भाई, है या नहीं? Sir, Clear? repeat. Can you please repeat? What I am telling, if you configure the OSPF on all the router, it means now all the router form a neighborship with each other. सारे के साथ Yes. neighborship Yes. बना लेगा. Fine. Neighborship. Neighborship बन गई. उसके बाद what this router will do? For example, R5 and R6 is the neighbor. Suppose कर लो Yes. ये एक Yes. दूसरे का neighbor है ना, और ये इसके साथ भी neighbor है, कोई दिक्कत नहीं है. अब नहीं. ये क्या कर लिया ना, सभी के साथ क्या फॉर्म कर लिया, एडजेसेंसी. एडजेसेंसी का Adjacency. मतलब होता है कि सारे के साथ अपना डेटाबेस शेयर करेगा. Hmm. क्लियर? तो सी ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? फॉर एग्जांपल, ये R5 है, ठीक है. R5 को ना कोई डेटा शेयर करनी है, ये क्या करेगा, एक डेटा उठा करके कहां भेज देगा, R1 को, अपने DR को. फाइन. एंड Yes. एक डेटा उठा के कहां भेज देगा, इसे भी. फाइन. अब DR क्या करेगा, इस डेटा को की कॉपी करेगा और इस कॉपी करके सारे राउटर के पास भेज देगा. बिकॉज व्हाट इज द यूज ऑफ DR? DR बेसिकली आपके नेटवर्क में मल्टी एक्सेस सेगमेंट में DR क्या होती है, एक ना लीडर की तरह बिहेव करती है. हाउ? act like a leader, because every router will share its database with the DR, and DR is responsible for to copy it and share with other router. मतलब ये राउटर क्या करेगा, अपना डेटाबेस DR के साथ शेयर किया, DR क्या करेगा, इस डेटाबेस की एक कॉपी उठाएगा और सारे राउटर को के पास भेज देगा. अब नाउ सी व्हाट इज द प्रॉब्लम. दिस राउटर फॉर्म ए एडजेसेंसी विद एवरीवन. सारे के साथ अपना एडजेसेंसी बना रखा है Yes. ना. Yes. मैं बात कर रहा हूँ DR BDR इलेक्शन नहीं हुआ है उसकी, ना होने पे क्या प्रॉब्लम होगी. अब इसने अपना डेटाबेस इसके साथ भी शेयर कर दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी कर दिया. अब इसने अपना डेटाबेस DR के साथ भी शेयर कर दिया. क्लियर? अब DR क्या करेगा, उसकी कॉपी उठाएगा, फिर सबके साथ भी भेज देगा. सबको दे देगा. हाँ. अब देखो, एक राउटर के पास सेम डेटाबेस कितनी बार आ गई, 2 टाइम्स मल्टीपल टाइम. हाँ, 2 टाइम तो आ गए. आ गई ना. सो हाँ. व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? ये क्या कर रहा है, नेटवर्क पे कंजेशन बढ़ा रहा है. कंजेशन बढ़ा रहा है. Yes. So basically, na, if we do not configure and if there is no DR and BDR election, na, what will happen? What will happen? क्या होगा?
बताओ। देखो मैंने क्या लिखा है, टू रिड्यूस द फ्लडिंग ऑफ डेटाबेस वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ डीआर एंड DR and वीडीआर। VDR. अगर It is आप the डीआर concept of वीडीआर का इलेक्शन नहीं करते हो तो आपका डेटाबेस का फ्लडिंग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? इट मींस एवरी राउटर हैव एटलीस्ट 2 कॉपी ऑफ इच डेटाबेस, है ना। जैसे इस okay. राउटर के पास इसकी भी 2 कॉपी होगी डेटाबेस की, इसकी भी Hmm. 2 कॉपी होगी, इसकी भी 2 कॉपी होगी, और इसकी भी 2 कॉपी होगी। Hmm. समझ में आया? Yes, क्लियर yes. है? तो अब सभी राउटर के पास सोच लो कितना डेटाबेस बढ़ जाएगा, डेटाबेस की फ्लडिंग हो जाएगी एक तरीके Conjection से, हो जाएगा. है ना। so that's the reason to avoid the congestion, or you can say the avoid the flooding of database, we need a dr and vdr election. Clear na everyone? Yes, yes. Okay, now what is the election process? What is the election process? तब Election से मैं क्या process. बोला हूँ, ओएसपीएफ डीआर बीडीआर का इलेक्शन तो मैं कल से बता रहा हूँ ना, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। द Yes, yes. राउटर द सेगमेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, राइट। वन सेगमेंट के अंदर जो Yes, भी yes. Ah, राउटर्स yes. होते हैं वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। each router Ah, yes. generate the router id with a unique identifier, right ना। router Yes. exchange ospf hello packet containing their router id, yes, router exchange Router hello ID. packet, and in this hello packet there is a router id. Router ID. Router The ID. router with the highest priority will become the dr, पहले priority match होती है, if priority will match then second will be, second highest priority will be Highest the bdr, router ID will be ठीक है। और BDR. अगर Yes. प्रायोरिटी टाई हो जाती है देन राउटर आईडी। क्लियर ना? अरे बता दो। इफ नो प्रायोरिटी इज Yes. कॉन्फ़िगर्ड, If ओएसपीएफ match, राउटर हैव if बाय डिफॉल्ट priority प्रायोरिटी match, 1, then बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी विल बी 1। if priority match, इफ प्रायोरिटी विल मैच देन हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी द डीआर, हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी दी, लिखा हुआ, DR. लिखा है ना, सेकंड हाईएस्ट जो बनेगा वो बीडीआर बनेगा, और हाईएस्ट जो हाँ, बनेगा वो क्या बनेगा, डीआर बनेगा। DR. ठीक है। और अगर प्रायोरिटी टाई Yes, हो yes, जाती है, बाय yes. डिफॉल्ट And प्रायोरिटी 1 होती if है, अगर वो प्रायोरिटी टाई हो जाती है देन हाईएस्ट राउटर आईडी विल बिकम द डीआर। highest ठीक है, router ID. क्लियर, Okay. Yes. will Okay. become the dr, and once the dr and bdr is elected, all the router establish a adjacency with only dr and bdr, this is very important। अब देखो यहाँ क्या हो रही थी, प्रॉब्लम क्या थी, The DR and देखो BDR are selected. R1 थी, R1 थी, स्विच थी, R2, R3, R4 एंड R5। यहाँ पे जब डीआर बीडीआर का Mhm. इलेक्शन नहीं हुआ था, तो इन दिस केस व्हाट एवरी राउटर इज डूइंग, एवरी राउटर इज फॉर्मिंग द एडजेसेंसी विद ऑल द राउटर। सभी एक दूसरे के साथ एडजेसेंसी Yes. फॉर्म कर लिया था, यानी सभी एक दूसरे के साथ Adjacency. डेटाबेस शेयर कर रहा था, राइट। नाउ Hmm. आफ्टर डीआर एंड बीडीआर, दिस राउटर शेयर द डेटाबेस ओनली विद डीआर, अपने डीआर और बीडीआर के साथ ही अपना डेटाबेस शेयर करेगा, और ओनली डीआर एंड बीडीआर विल मेक द कॉपी ऑफ दैट डेटाबेस एंड शेयर विद अदर डीआर अदर्स। समझ में आया? इससे फ्लडिंग अवॉइड हो जाएगी। क्लियर, अंडरस्टैंड, Yes, sir. या फिर कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नहीं. अरे मैं ये बोल रहा था, देख लो, R1 स्विच, R2, R3, R4, R5। R5. अब मान लो डीआर बीडीआर की इलेक्शन हो गई, दैट इज द डीआर एंड दैट इज द बीडीआर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, BDR. Yes. what R5 will do? Now R5 form the adjacency, यानी adjacency का मतलब होता है कि डेटाबेस जिसके साथ वो शेयर करेगा, ठीक है। R5 form the adjacency with only R1 and R, देखो R5 नेबर सभी के साथ है, नो प्रॉब्लम। R1 and R2. Hmm. मतलब अगर मैं एक मैं सोसाइटी में रह रहा हूँ, तो इस सोसाइटी के अंदर मेरा पड़ोसी तो सभी है, बट क्या सभी के साथ मेरा Hmm. कोई लेना देना थोड़ी होता है। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं. गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली हेयर Once इन दिस, once elected at DR and BDR, then it क्या बोलेंगे सर? देखो, once dr and bdr is elected then all the dr other router form the adjacency with only dr and bdr। ठीक है, यानी अगर Okay. इसे अपना Adjacency. डेटाबेस शेयर करना होगा तो ये सिर्फ डीआर और बीडीआर को देगा, इस दोनों को नहीं देगा। Okay, okay. और अगर इसके पास डेटाबेस आ गई, व्हाट डीआर विल डू, डीआर विल जस्ट मेक द कॉपी ऑफ दैट डेटाबेस एंड फॉरवर्ड हियर, इस दोनों को भेज देगा। अब इस दोनों के पास आपके डेटाबेस की कॉपी, कितनी कॉपी गई, एक ही कॉपी तो आई। एक एक कॉपी. अब हाँ. पहले कितनी जा रही थी, दो दो जा रही थी, है ना। तो टू Yes, अवॉइड पहले दी, दो जा रहे.
फ्लडिंग ऑफ डेटाबेस वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ डीआर एंड बीडीआर। समझ में आया? क्लियर है? नाउ इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द यूज Yes. ऑफ बीडीआर Yes. हियर, तो बीडीआर का क्या यूज होता है? इफ डीआर फेल्स देन बीडीआर विल इलेक्ट एज ए डीआर। बीडीआर कैसे इलेक्ट हो जाएगा? डीआर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है ना एवरीवन? Once DR link fail. Yes, when DR router fail or DR router goes down, then your BDR Okay. router will act like a DR. Work as a DR. Okay. Yes. And what is the benefit? To reduce the network traffic and overrate and minimizing the number of adjacency. Number of adjacency को minimize कर रहे हैं ना? Right now अगर करने के R5 लिए जो है BDR सिर्फ 2 राउटर के साथ adjacency फॉर्म कर रखा है, बट जब DR BDR कलेक्शन नहीं हुआ था तो बाकी चारों के साथ adjacency फॉर्म था, right? So to reduce the number of adjacency, we have a concept of DR and BDR. Clear है? Understand? Yes. Yes. Yes, संतोष, sir. I hope you guys understand it. Tell me. अरे बताओ। संतोष, सचिन, Yes, sir. अंडरस्टैंड ना? अभी तक समझ में आया ना? टेल मी। Am I audible to all of you or not? Sir, hello. Yes, yes. Am I audible? Am I Yes, sir. audible or Yes, not? yes. Audible. Yes, yes. You are audible. Santosh, are you there? Earlier, the voice was breaking. I hope you guys understand till now. Clear na? I Yes, sir. already Yes, I already yes. told you I do not have any PPT or any content for the OSPF. Okay. So today I make these Okay. content for you guys. कि थोड़ा बहुत मैं आपको Okay, sir. आपको हेल्प कर पाऊंगी. Okay. Okay. So Yes, yes, sir. Thank you. LSS1. So see na, LSS1 is also known as router LSS. Fine. Generated by each OSPF router generate its own type 1 LSS. यानी कि जितने भी राउटर OSPF में दिखेंगे ना आपको, हर राउटर याद रखना LSA1 हर राउटर ही जनरेट करता है. ये फिक्स है. क्लियर? अंडरस्टैंड? नाउ Okay, okay. व्हाट इज द कंटेंट? LSA1 also known as router LSA describe the state of routers directly connected link. इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट राउटर्स इंटरफेस. राउटर के इंटरफेस के बारे में बताता है, आईपी एड्रेस, नेबर और नेबर का क्या स्टेट्स है. दीज आर द इंफॉर्मेशन जनरली यू गाइस विल सी इन द LSS1. फाइन. LSA1. Yes. LSS1 include the router ID also. router ID भी आपको दिख रहा था, राइट? एंड एज वेल एज द कॉस्ट वैल्यूज Yes. भी दिखेगी आपको. ठीक है. Okay. LSS type 1 is flooded throughout the router OSPF area. For example, this is area number 0 and there are R1, R2, R3. All the three router. It means all the three router exchange the LSS number 1 with each other in same area. ठीक है ना? दूसरे एरिया में कभी भी आपका LSS1 Yes, yes. LSS ट्रेवल नहीं करता. फाइन. नहीं, LSS1 नहीं. ट्रेवल नहीं Okay. करता. ठीक है. Router use LSA type 1 to build a detailed map of the network topology within the area. Yes. For example, if there are three router, all the three router exchange the OS type 1 LSS. Fine. So for example, this router have first of all its own LSS. फाइन. इसके खुद का भी एलएसएस होगा, इसका भी Yes, एलएसएस पहुंच yes, गया और इसका भी एलएसएस yes. पहुंच गया. अब ये क्या करेगा? तीनों एलएसएस को कंबाइन करके एल्गोरिथम रन करेगा और शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करेगा और अकॉर्डिंगली क्या करेगा? अपना राउटिंग टेबल बनाएगा. क्लियर Okay. ना? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एल्गोरिथम? दीक्षित एल्गोरिथम. क्या नाम है उसका? दीक्षित एल्गोरिथम नाम है. ठीक है. क्लियर? Dijkstra. हाँ, Dijkstra. दिक्स्ट्रा एल्गोरिथम. Okay. Dijkstra. Yes. Okay.
Type 2 LSS. LSA type 2. LSS 2. So the see Generated type by 2 LSS DR. is also Okay. known as नेटवर्क एनालिसिस. क्या बोलते हैं उसे? नेटवर्क LSA एनालिसिस network. बोलते हैं. तो Network प्लीज LSA. रिमेंबर दिस वन, There जनरेटेड बाय, must be network address. सॉरी, सी फर्स्ट थिंग, एलएसएस 2 इज जनरेटेड बाय, कौन जनरेट करता है? प्लीज रिमेंबर, दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन. ओनली डीआर. Network segment. Yes. ओनली डीआर. Yes. तो Okay. याद रखना एलएसए 2 हमेशा और हमेशा डीआर ही जनरेट करता है. क्लियर? DR generate करेगा. सभी There राउटर जनरेट there नहीं will be करते. ऑल network द address राउटर्स only. डू नॉट जनरेट दिस वन, ओनली डीआर राउटर विल जनरेट. फाइन. Okay. Okay. Yes. Now content in LSS2, what will be the content? Yes. Fine. It contain information about network segment, Network. including IP address, Network right? segment. So basically na router ID Hmm. also. So basically these are the information in type 2 LSS. Fine. LSS Okay. type 2 is Yes. flooded throughout the OSPF area. It helps router on the network segment identify the DR and BDR. अब देखो ये नेटवर्क है, एरिया नंबर 0 है, Hmm. R1, R2, R3, R4, 4 router हैं. Let's suppose R1 is the DR. It means LSS2 only generated by DR. Fine. And this DR, sorry, this LSS2 will flow इन एरिया नंबर 0. ये एरिया नंबर 0 में फ्लो करेगा और हर राउटर के पास जाएगा. फाइन. व्हाई? बिकॉज ये बताना चाहेगा ना कि भाई तुम सभी राउटर को पता होनी चाहिए कि आपके नेटवर्क में डीआर कौन है. राइट? I am the That's DR the ऐसा reason we करके. need हाँ. DR, LSS2. This is the use of LSS2. Router use LSS2 to determine the topology of the multi-access segment network and to establish adjacency with DR and BDR. Yes, DR और BDR के साथ adjacency भी तो बनानी है. Right ना? अरे Yes. for example, if we have this type of topology, for example, R1 is the DR. Yes. R1 send LSS to, fine, and this LSS will reach on all the router, and by the help of these Yes. LSS, this LSA number 2, all the router will know na in our multi-access segment who is the DR. Router number 1. Router number 1. Yes. Are clear na? One. Okay. Now come on Yes. router Yes. number 1. Let me check the IP address is configured or not. IP interface brief. No, nothing is configured. Hmm. 0 IP address 12.1. Loopback 1. I configured this one. Then router OSPF. Let's suppose I am using 100 network 12.0.0.0 0.255.255.255 and area will be 0. 1.1.1.1 0.0.0.0 area will be 0. Clear na? I configured everything here on R1. Okay. 12.2. 12.0. Sorry, 12.0.0.2 to 55.0.0.0. No, shut down. Interface loop back 1. Address 2.2.2.2. 55.255.255.255. No, shut down. Router OSPF 100. All routers are connected in one network only. Mhm.
बीच में स्विच है ना, Yes. बीच में स्विच है तो एक ही मल्टी एक्सेस सेगमेंट हुआ नहीं है। Yes. 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 0 0 12. We enter the IP address on single port. एक मिनट एक मिनट। तो आते हैं R3 पे। R3 पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस विल बी 12.3 ना। 12.3. Yes. राउटर ओएसपीएफ इतना 12 नेटवर्क फाइन, एंड नेटवर्क वी विल एडवर्टाइज 3.3.3.3, right? 3.3.3.3. 3.3.3.3। Sir, I it's think we did one mistake here on R2। I don't think कि मैंने यहाँ पे लूप बैक क्रिएट किया था। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है ना सर? created interface loop back 1 We are in router 2. of interface loop back 1। एक मिनट, मैं यहाँ पे क्या आईपी एड्रेस दिया था? आईपी 2. एड्रेस 2 डॉट 250. 2 डॉट 2 डॉट 2 255.255.255 डॉट 255. 255. यही दिया था ना। Yes. 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 Right. राउटर नंबर 3 पे है ना। Here we configure 12.3 loopback 1 loopback 1। Here we need to configure 3.3.3.3, right? 3.3.3.3, this one. So where is typing? I am not able to see. Have you Okay. type? Okay. Okay. Your copy first. Interface brief. 12.3 is configured there. Yes. 3.3.1. 3 dot also configure. IP protocol. But network. Router OSPF 100 is also configured. 12th network is already advertised, and 3 network is also advertised. Right now? अरे सही तो है Yes. Sir. है ना? इसीलिए मैं लिख रहा था कि एक ही बार में कॉपी पेस्ट कर दूं। Hmm. On router number 4, Oh. what we will do? Router We number have 4 to change only IP address, bus. IP address will be 12.4 and loopback will be Loopback 4.4.4. address
4.4.4. And network will be also na 4.4.4.4. Network, yes. Yes. IP brief. Yes, 12th network and 4 network. ठीक है ना? So Fourth IP and fourth. interface brief. IP brief. 12.4 and 4.4.4. 4.4, yes. आ जाओ 5 पे. ऑन 5 पे आप क्या करोगे इस पे? 5 dot और 12 dot कितना है? 5. 12.5. यस, 12.5 करोगे. 12.5. इसके बाद 5 डॉट. Move that 5 हम्म. to network. ओके, आई डिड द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यार. ठीक है ना? Yes, क्लियर ना? yes, yes. नाउ लेट्स सपोज ऑन R1 आई एम ऑन R1. ठीक है, आई एम ऑन R1. आई एम. R1. तो IP OSPF नेबर. हु इज द नेबर? हु इज द 2, yes, 2 is the neighbor and 12, 2.2 uh, dot 2 is the neighbor. yes, only 2. 2.2 dot is the neighbor. भाई इट शुड बी ऑल ना, इसका सारा नेबर होना चाहिए ना? हाँ, इसका तो सारा ही नेबर होना है सिंगल नहीं है. नेटवर्क में. लॉजिक बताओ. वन थिंग, एक हाँ, चीज देखो, सारे इंटरफेस क्या पड़े हुए हैं? अरे डाउन पड़े हुए हैं डाउन सब. डाउन, यस, रेड पे दिखा रहे, यस. ओके, हाँ, नो शट करना पड़ेगा. जीरो बाई जीरो. नो शट डाउन. यस, इट हैज अ जो इस पे इंटरफेस गिव रेडियो है. जीरो बाई जीरो. नो शट डाउन. क्लियर? यस. मैं आता हूँ R1 पे. अब मैं चेक करता हूँ. सो IP OSPF नेबर. ओके. 2 के दो नेबर बने. दिखेंगे. 3 नेबर इसमें नहीं, बने. R1 में है. अच्छा, धीरे धीरे करके वो जैसे फुल वाले स्टेज में जैसे आ रहा है. हम्म. इसको टाइम लगता है ना 30 सेकंड फॉरवर्डिंग में आने ओ में. यस, यस, यस. बिकॉज L2 इज स्लोअर देन L3 है यस. ना? STP RSTP में बताया तो था. देखो आ गया, आगे. 5 वाला आ गया. यस. क्लियर, पांचों आ गए. इसके बाद यस. देखो, हु इज द डीआर? कौन डीआर बना? DR. DR. ऑल आर. All are DR and 2 थ्री is, फोर फाइव. थ्री yes, फोर फाइव दीज आर द डीआर अदर. DR, राइट. yes, yes. आर द डीआर. फाइन. एंड R2 इज द BDR. R2 the main main DR is, which is the main BDR, DR Right now, who is the DR? 3.3.3. See what right now, who is the DR? R1 Yes. is the DR and R2 is the R1. BDR and Okay. rest are DR other. Bro, But yes, but actually what should be there? part of the DR, कि yes. आपका हाईएस्ट राउटर आईडी किसका है? Highest router ID 5 का है. तो 5 बनना चाहिए ना डीआर. Yes, हाँ. क्यों नहीं बना? बिकॉज ना इट टेक्स 40 सेकंड. अगर आपने 40 सेकंड का टाइम इंटरवल होता है, ठीक है. अगर आपने हाँ. 40 सेकंड के अंदर सारे पे कॉन्फ़िगर सेम टाइम में कर दिया, तब तो वो बन हम्म. जाएगी. अदरवाइज आपको यू नीड टू रन वन कमांड, क्लियर IP OSPF process SPF process. Okay, okay. on all the router 1, router 2 also. I am writing here, clear IP OSPF process, yes. Router number 3,
on router number 4 and trust router number 5. फाइन, मैंने क्या Yes. किया, ऑन सारे राउटर में मैंने क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस करा कमांड, दिया। ठीक है। नाउ कम Yes. ऑन R1, on R1 now I am checking, so IP OSPF neighbor, so IP Okay. OSPF neighbor, who is the Never. DR now? The DR. 5 is the DR. Yes. Yes. 5 is the DR. 4 is the BDR. Less than 5 that are BDR, Yes, and two other are the part of 5.5.5 the dot is DR. the DR, and who is the BDR? 4 is 4.4 the बताया था ना, folder. second highest Yes. will be the BDR, Yes. right? Yes. Yes. And rest are DR other, DR. rest are DR other. Fine, understand na? Last thing, uh, let's suppose if I want R1 should will be the DR, मैं चाह रहा हूँ कि R1 मेरा DR बन जाए. What I will do? Either one thing I can configure router ID 6.6.6.6, या तो मैं ये Yes. कर दूं, Yes. Yes. then it will Yes. become. Otherwise, for example, I want to change the priority. अगर मैं चाह रहा हूँ priority के basis पे बने, तो क्या करूंगा मैं? By default, what is the priority? One. One. One is the priority. If I change the priority on R1, Hmm. if I change the priority on R1, R1. बताया था ना, highest priority will be the prefer, यही तो बताया था. बताओ, सर रिपीट करेंगे, आवाज ब्रेक। मैं ये बोल रहा हूँ highest priority will be prefer ना. First of all, यस, router प्रायोरिटी will विल बी check the, yes, first of all, router will check the priority. प्रायोरिटी। Priority will tie, then after router will check the router ID. Fine. By यस default here priority is 1. So that's the reason router is checking the router ID. Fine. Now what I am doing on, right now I am on router number 1. Right now मैं router number 1 पे हूँ, यस यस यस। and interface is gig 0 by 0. Please यस remember always, यस। priority always we change the priority on the interface. Fine, not on the router. ठीक है, ओके ओके ओके। change होती है. So gig 0 by 0, इंटरप्रेट CI 0 by 0। interface gig 0 by 0. What is the command? IP OSPF priority. For example, I am writing priority 10. मैंने क्या किया, priority 10 लिख दिया. 10 कर दिया फिर तो एक बार clear प्रायोरिटी IP बढ़ गई इसकी। OSPF प्रोसेस चला दो. यस यस। ठीक है, now clear ना. Now come on एनी अदर राउटर, कोई राउटर पे आ जाओ आप. मैंने R3 पे आ गया मैं, ठीक है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो IP OSPF नेबर, ठीक. Who is the neighbor now? Sorry, DR now. Is the DR just yes, 1 is DR. One is the DR. Yes, DR. Priority is 10. Hmm. Yes, Because yes. one has priority higher. I hope you guys understand it. Right? अरे बता दो, क्लियर है? Yes, sir. Clear. 1.1.1 is the DR. DR. So IP OSPF neighbor. Fine, all are, see na, all are, 4 dot is All the are BDR BDR. and rest are DR other. They start the DR. R1 itself has a DR. इसका मतलब खुद क्या बन गया? DR बन गया. Could be DR. तो Yes. IP OSPF पर, तो IP OSPF, Sir, we are not showing here database. 1.1.1. सॉरी, Okay, ये अभी मैंने क्या earlier राइट count किया कि, तो IP OSPF डेटाबेस. database. Okay. तो सी गाइस, दिस इज कॉल्ड LSA number 1, LSA1 number 1, LSA and number this is 1. the Clear LSA ना? number 2. And what is Yes. this? This is LSA number 2. I told you 2. who generated the LSA number 2? Only DR. कौन जनरेट Okay. करता है? DR. Only DR. So DR. that's the reason you see ना, what is the information here? Only DR information. Net, network information there. आपको इसमें सिर्फ आपको DR की इंफॉर्मेशन ही दिखेगी. That's the reason here only DR. And who is advertising? Only DR. Okay, 1.1.1.
1 dot 1. It means only DR will advertise, sorry, only DR router will Yeah. advertise the LSA 2. Okay. Yes. Understand? Clear? Yes. Yes. Sir. So this is That's something about the DR and what's BD. DDR. So we did here configure the OSPF on all router. Yes, elaborate need of DR and BDR. मैंने आपको बताया what is the problem we face if we do not have the DR and BDR, right? Yes. After Yes. configuring OSPF on all the router, they establish neighborship with each other, but form a adjacency with only DR and BDR, right? जितने भी Yes. DR other routers हैं, right? Yes. Router 5, 4 and 3, right? These router will form a neighborship with all the router, है ना? अगर आप Yes. इस पे जा करके R5 is the DR other router ना, अरे बताओ, Yes. Yes. अगर In this आप यहाँ पे condition. दो Now. IP Now condition. OSPF नेबर डालोगे तो ये सभी के साथ नेबरशिप बना रखा है. Yes. 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 R5 is the neighbor of every router, but it will Yes. form a adjacency with only DR and BDR. DR and BDR. Yes. Yes, it means it will send the database only with DR and BDR. BDR. If you change the DR, we have to clear the IP OSPF process on all the router. ठीक है, clear है? उसके बाद Yes. election of DR. First of all, priority, and if priority will tie, then router ID. Fine. Router ID. By default, priority will be 1. Fine. And how Yes. can you change the priority? You need to go on the interface and you need to write the command IP OSPF priority and whatever the priority you want. Clear na? So basically, this is the concept of DR and BDR, BDR. LSA 1, LSA 2. Clear na everyone? Yes. Yes. Sir. Clear hai?